जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू एयर स्टीवर्डेस वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आज का जो टॉपिक है वो हमने कमेंट सेक्शन से चूज किया है। आप में से ही किसी ने इस क्वेश्चन को रेज किया है। सो द क्वेश्चन फॉर द डे इज, कैन फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई इंटरनेशनल? इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्रेशर हो और आप डोमेस्टिक एयरलाइन के अलावा इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करना चाहते हो तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं? सो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस, यू कैन अप्लाई फॉर एनी इंटरनेशनल एयरलाइन इफ यू आर अ फ्रेशर only if you have completed 21 years of age. So before appearing for any international airline, just cross check whether you have completed 21 years of age or not. अगर आप 18 years के हो, you can go for any domestic airline, gain experience for 2-3 years and then you can apply for any international airline. According to me, I would suggest go for any domestic airline initially, gain experience for 2-3 years, get used to the atmosphere, get used to fly in different states in 2 degrees Celsius, 0 degrees Celsius or -2 degrees Celsius, and then apply for international airline. Then it would be easier for you to get adapted in that atmosphere and temperature. So ladies and gentlemen, boys and girls, we have talked about almost everything. I hope you have liked the video. If you have any doubt, DM me on Instagram. My Instagram ID is in the description box. If you have liked this video, do not forget to hit the like button and do not forget to share and subscribe, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है. So that's all. Bye bye. Take care of you and your family. Love you all. जिंदगी मेरी